I love the music, but I think that should be enough for today. We got such good guests right here in front of me. My good friends, Rimple and Gotham, they are here from India, and they were here Thank last. you. Thank you. Thank you. Welcome again. And it's so nice to see you guys so enthusiastic and so anxious to come to our program, which I love. तो मुझे अच्छा लगता है कि when people are excited to come, तो कमलेश जी, good morning, thanks for coming. The best team, yes, you're right, that is the best team. So we we're thrilled to have the two of them with us. Like last time मैंने भी यही छोटी सी introduction दी थी. And Gautam ji is a psychic medium, tarot reader, and along with him is Rimple, who is also an artist, tarot and chakra reader. They will dive deep into the world of tarot today and reveal our unique psychic tarot reading abilities, which means that if you want to learn how to do the tarot card reading, you can do that too. Now, why is it beneficial to learn if you don't want to do it? If you don't want to do it, then why you want to learn? So these are the things we're going to discuss today, and they're going to give us some good examples and good feedback about some cases that they had recently. So I want to say good morning, good afternoon, good evening to all my friends wherever they are. They're going to join us later on. Some of them have joined now, and hopefully your friends will join from India. Some of them they joined, quite a few of them last time, and they also have become our members too. Good morning, Ramaji. Yeah. Our USP, we don't just read cards, they tap into energies and use their psychic gifts to give deeper insights and powerful guidance. So मैं ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि, like I said, कि why is it so beneficial to learn and not to, I mean, if you don't learn, and how do you benefit anybody? But if you learn, meaning if you don't learn, then you just somebody's going to read to you all the time. But if you learn, can you do that on somebody else? Can you help them? If they ask you any questions, Okay. can you reach that level or not? That's what I'm saying. सीखते तो सब है, लेकिन can we reach that level? How long does it take to be like you or Rimple? तो थोड़ा सा जरा आपको elaborate करो, थोड़ा सिखाओ. Good morning शैली जी, good morning Rajan, Nagpal, Usha ji, Kamlesh ji, Rama ji, good morning to all of you. And as you all know that this is Rimple and Gautam, they were here last Friday. And any questions you have, like last time I asked everyone, please bring them today. If you have anything left over from last week, you can definitely ask them today. Good morning Paresh ji, नमस्ते आपको भी. तो मैंने आपको गौतम जी पूछा क्वेश्चन किया, तो आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दोनों बताओ कि pros and cons, or what is good about how do we learn and how much can we achieve by learning and helping. And Okay. I'll start off with thanking you again for inviting us for the second time here. In fact, for a total of 3 times, but second is in this series now. And let's see how we can take this further ahead. Number two, people in India must be wondering आप good morning क्यों कह रहे हो? Because you are from New York. I know, तो yes, अभी जिनको नहीं पता, she's in New York, तो इसलिए वो good morning, उनका good morning है, हमारा good evening है अभी. Number three, I'll start off with your beautiful song that you always play, and I just love this song. ये हमारी साइंसेस में, या जिसको जो हम ऑल्टरनेट साइंस करते हैं या ओकल्ट बोलते हैं या टैरो फॉर दैट मैटर, तो ये क्या चीज हो, दिल दिए गलना हम आपस में बैठ के करें, टू फाइंड दैट ट्रू पर्सन. Who is that true person? That true person is the soulmate. How to find that soulmate? But have you found your soulmate? You should ask your question. Soulmate doesn't necessarily mean your husband, your wife, your friend. It could be anybody. It could be anybody, any third person also with whom you associate very closely. That's a soulmate. तो आपको अपना soulmate मिला है, तो that song actually मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि मतलब people should associate, they should know कि everybody needs companionship, right. and tarot will help you with that as well. आप tarot से कुछ भी पूछ सकते हैं. अभी आपने पूछा कि जिसने अगर नहीं सीखना tarot, जिसको प्रोफेशनली जो नहीं करना चाहता, उसको तो बहुत जरूरी है. I have seen. Why do I say so? I'll tell you in 2-3 different pointers. I'll give it to you. Number one, we have around 60,000 thoughts in one day in our mind. Wow. हमारा mind जो है 60,000 thoughts सोचता है एक चीज के बारे में, and most of them are in the form of questions.
अब मैं लेट तो नहीं होगी सेशन के लिए, ठीक से होगा कि नहीं होगा, कनेक्टर होगा कि नहीं होगा, उनको मैसेज चला गया कि नहीं चला गया, मेरी लिपस्टिक ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन, from small to bigger events in life. Should I invest here? Should I get married here? Should I talk about, should I, मतलब everything is a question. कुछ भी आप सोचोगे, it will be in the form of a question. So we need a guidance tool. We need some mentor. We need some guru. We need some friend. We need some guidance factor. We need कोई चीज हमारे को चाहिए जो हमारे को गाइड करे, हमारे को क्वेश्चंस का आंसर देने में, बिकॉज हर चीज वी कैनॉट आस्क टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद एवरीबडी. There are some of the personal questions we cannot ask everybody. So That is tarot is a tool where you can, make tarot your friend. It will answer you each and every question. So मतलब you'll get clarity of every sort. And when you get clarity, you get very good ideas. So when you get good ideas, you can live life in a better way. So to live life in a better way, to transform your life, I insist that you should definitely do a small course of tarot and ask tarot. It's very simple. I made these cards very simple. These are the tarot cards. इसके ऊपर सबको मीनिंग्स लिखा हुआ है, फोटोग्राफ्स राइडर वेट की हैं. इट विल टेल यू एवरीथिंग कि क्या है, एंड देयर इज नो सुपरस्टिशन अबाउट इट. just one question. All you do is when I see you, आप एक आपने card is faced upside down, then you just pick up, or how do you pick up the card? Excellent, very, very, very valid question. Yes, cards are like this, placed on the ground, on the table, and Right. and intuitively, जो भी आपका क्वेश्चन, इंट्यूटिवली जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, वो ही कार्ड निकल के आता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट Right. फाइनेंस, so there's a suit called the suit of pentacles, which depicts money, finance, material possessions. So it will 100% it will answer you on that. It is very amazing. Yesterday only I'm taking a course now. So I'm teaching tarot as well. So yesterday one of my students was asking कि sir कैसे होगा? Will it be possible? She was asking कि मैं अपना if I do my tarot business, if I take it as a business, will I start earning? तो दो कार्ड्स निकले, एक स्ट्रेंथ कार्ड निकला और एक 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला. तो स्ट्रेंथ कार्ड, यू आर व्हेन यू डू दिस कोर्स, आपका स्ट्रेंथ है इसके अंदर, आप कर सकते हो. 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर मनी कार्ड है, आप कर पैसे का कार्ड है, तो इट ऑलवेज मतलब वो आपको एनर्जी पकड़ के वही आंसर करेगा जो आपका क्वेश्चन है. इट इज टोटली अमेजिंग. But one question, quick. When you see the card, you have to know the meaning of all the whatever's on it, right? यस. सो That is द a मीनिंग ऑन इट. हाँ, तो वो मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो कार्ड्स बनाए हैं, मैंने आई गॉट लास्ट टाइम लाइक आई टोल्ड यू towards the end of the session, they have written a book also on tarot. So right. tarot, उसके अंदर जो कार्ड्स हैं, these are based on the Rider Waite cards. ये इटली के कोई थे, उन्होंने सारे ये कार्ड्स बनाए हैं, एंड ये सब के ऊपर इसके ऊपर ना मीनिंग्स लिख दिए मैंने, कार्ड्स के ऊपर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं. Okay. So you can become it's मतलब because it's become very very easy. Anybody and everybody can read their जो भी उनको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, you can do your own readings. It is good. I mean, little आवाज नहीं अभी आ रही थी. Okay. Okay, now. अभी ठीक है? Yes. Yeah. Yeah, that's what he's saying, Kamlesh ji, कि उन्होंने कार्ड के ऊपर ही मीनिंग लिखा हुआ है. So when you turn the card and read, the meaning is right there, explained to you, right? Is that correct? And yes, and you want a more extensive reading, then you can refer to the book. Right, exactly. Very simple. People around the globe have made it complex, but it is not complex at all. It's very very simple. So this is the book, and in the book form, in the book also, the meaning of the cards have been given in very very simple point forms. And you open that page, कोई भी एक लाइन पे हाथ रखोगे, आपके क्वेश्चन का 100% आंसर उस लाइन में मिल जाएगा. I'll give a demo. This is based on what kind of a, I mean, who started this thing and what is it based on? Like, See, it was started in 1850s in Italy somewhere. Nobody knows the exact form. It was some says they were used as playing cards, which I really don't believe in, because tarot is a life journey. So इसमें दो सेक्स होते हैं, एक मेजर आर्कना होता है, एक माइनर आर्कना होता है. तो मेजर आर्कना विल शो यू द मेजर decisions of your life, minor will show you, depict the minor decisions of your life. So जब ये टैरो जब हम आए उसमें,
तो दे शो आर लाइफ जर्नी, हम कैसे, जब हम होश संभालते हैं जिसको हम बोलते हैं आफ्टर स्कूलिंग, व्हेन वी गेट Right. आउट इनटू द मार्केट, तो हमने स्कूलिंग करा, वी मीट अ फ्रेंड, हम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसमें फिर हमारे को प्रॉब्लम्स, कैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सॉरी, तो दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. Yeah, it is. It is. I mean, the way the way I see you doing it, I mean, right away you give the answer. Anybody ask a question, so it's really amazing. So I just want to ask Rimple, do you do the same way or your style is different? How do you do it? आपका No, पास तो it's same. है ना पढ़ने के लिए. And it's the same way, similar way only. I do it the Similar. similar way. Yeah. So you learned from the guru right here. You learned Yeah, from the yes. No, I am no guru. I Oh, just, so they got it's passion. I got a passion for it. Yes, I've been pulled into spiritualism, right. and it is amazing actually. Helping people is, gives a lot of Yeah. internal peace and happiness. Yeah. So I mean, Kamlesh is asking. So anybody can read the card and give the answer, but you have to be a little bit. Anybody can. Yes, I've made it very simple, Kamlesh. I've made it very simple. You don't need to go to any astrologers. You don't need to go to any these kind of so-called gurus, because मार्केट में अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो पैसे कैसे उनको कमाना आता है, बट आप अपनी रीडिंग खुद भी कर सकते हो. It's very simple. मतलब see, you need a little bit of logic, definitely, but with that logic you can do it. You have my kit. You can buy my book on Amazon, and I got my cards in India. I can email you the e-copy of it, and very soon I'll put it on Amazon as well, the cards as well. So in the next month onwards, you can buy those cards as well and do your own readings. That means अपने लिए क्वेश्चन खुद ही आंसर कर लो आंसर देख के. हाँ हाँ, हाँ, तो क्यों I नहीं, just खुद ही give आंसर, an जहाँ पे example. आपको, जहाँ फंसते हो, जहाँ आपका कौन, देखो कई बार आपको नहीं पता लगता हम किससे पूछें, I know. एंड देन अब विश्वास भी नहीं होता जो जिससे हम पूछेंगे, विल ही गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. So why don't you use your intuition? Why depend on others always? हाँ, That's- जहाँ टेक्निकल होता है, जहाँ मेजर क्वेश्चंस हैं, जहाँ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, then you should. But minor के लिए तो you can do your own remedies at home. For every cough and every headache, you don't need to run to a doctor always, no? That's true. That I agree. Because जैसे आपने अभी कहा था पहले कि the people you have like how many thoughts everybody goes through every day. Yes. So each question for thought, let's say कोई question थोड़ा question वाला थोड़ा serious है या little questionable question है, like you're not sure what to do, ये करें या वो करें, then this thing will be you'll make up your mind कि क्या करना Yes, चाहिए. yes. अभी जैसे अभी ना 2 दिन पहले ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो अच्छा. she was about her boyfriend, ex-boyfriend coming back into her life. So Rimple has done her reading. Rimple, can you just explain कैसे करा था, कैसे और कौन सा कार्ड आया? Just explain about the question first and then about the card. Yes. And then how do you read the card? Yes, I just took out the card. You have a business thing also, ना? एक business वाला question आया था आपके पास. अब वो भी कर सकते हो. You can do all the both the questions with them. Yeah, it's good to know some examples because you can हाँ. relate to that when you live At somebody that time, she wanted to know about that she will reconcile with her boyfriend again or not. तो Oh. हमने जब निकाला था तो it came this 5 of cups. Can you see the card? हाँ, now we can. Is it Now clear? थोड़ा सा अपना लेफ्ट पे ले लो रिम्पल, थोड़ा सा अपने लेफ्ट पे ले लो. Is हाँ, it बस clear? बस. Yes. ठीक What does है. it mean And now? Somebody standing there and with something, right? Yeah. Yes, हाँ जी. the person is standing there और जो cups हैं I can I think so you can see the cup. The नहीं, 3 थोड़ा सा cups left have पे कर लो. fallen down. Yeah. Yes. Is it fine now? Fire The of 3 Yes, cups yes, have yes. fallen down and 2 cups up पीछे right up है. Okay. And then we took a हम हमारे पास ये book है हमारी tarot की. This is a book. Yes. Okay. इसके अंदर से हम ये सारे keywords दिए गए हैं. The keywords are एक बार there. रिपीट कर दो, क्वेश्चन क्या था रिम्पल, उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था was, उनका? the girl wanted to know, should I reconcile with my ex-boyfriend? Reconcile with my ex-boyfriend. So she wanted to know with my ex-boyfriend, should I we be going together or not? Should I reconcile with him? And रिम्पल ने
क्या जवाब दिया रिपल I बताइए? said no, there's no point. You shouldn't reconcile because अगर आप फिर से reconcile करोगे तो फिर से आपको heartbreak होगा, separation होएगी. तो it's better not to reconcile because it's very Because sad. cups का कार्ड है, I'll tell you very Cups simple, का- it's cups का कार्ड है, cup shows emotions. और जो देखो वो आपको पिक्चर में पता लग जाएगा बीना जी, इवन यू कैन गेस दैट, बिकॉज वो दिख रहा है कि वो मायूस खड़ा हुआ है लड़का, जो Yeah. भी जना खड़ा हुआ है, his head Yes. is down, Yeah. wearing black color, he is not Correct. interested in the world, heartbroken. तो जब वही ऐसा कार्ड निकल के आता है, इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपने जो रिकंसाइल करने के लिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, नो ही इज नॉट द राइट चॉइस, he has not valued your emotions previously, he will still will not value your emotions, so you should not reconcile. You should not So this is reconcile. how tarot reading is done. And everything is given in the book. जो new beginners हैं, they can go through the book. You can read all these things in the book. It becomes Holding, very there's so interesting many also, in pages, fact. everything is given. Very sounds very interesting. Very interesting. So And because all keywords are there. आप keyword से आपको idea हो जाएगा. जैसे keywords इसका है sadness, loss, grief, regret, disappointment. आपको इससे से idea हो जाएगा कि आपका आंसर yes है कि no है. Plus हमारा yes no भी दिया हुआ है, elements भी दिए हुए हैं. And numerology wise भी हमने 5 of cups को interpret किया हुआ है. तो everything is there on the card as well as in the book. So for the beginner, it's very good. मतलब it's they can do the reading very fast. First day ही reading start कर सकते हैं. अगर आप Very फर्स्ट quickly, डे अपने Ripple, टैरो कोर्स करते Ripple, हैं, very quickly ने एक और भी आप वो करके बताओ, एक और जो आपके पास आया था ना, there वो was जो बिजनेस another वाला जो question. था. Yeah, there was another question. Will I be successful in my new venture? There's a lady, In my new उसने venture, अपना okay. कोई न्यू जॉब, हाँ, न्यू वेंचर स्टार्ट किया, तो she wanted to know कि वो she will be successful in it or not. तो उनका जो कार्ड हमारा निकल के आया था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया था. This is the card. थोड़ा सा Yeah, लेफ्ट पे कर लो. Yes, yes, Oh, yes. okay. the Just card. keep it stable. Yes, Ripple, yes. just keep it Yeah. stable for a couple of seconds. Yeah, now we can see it देखो now. इसके अंदर एक you see a female figure sitting on a stool kind of a thing. Yeah. She has got a crown, and crown के ऊपर कुछ moon type है. She is dressed quite well. I'm giving a very simple explanation. I'm not, giving you the technical explanation that I give in my course or in my class. It is very simple. That कोई lady है, कोई empress type की कोई lady बैठी हुई है, crown पहना हुआ है, पीछे कुछ black and white का कोई pillars है, उसके में बैठी हुई है, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है. She is wearing a gown. Authoritative figure नजर आ रही है. Right. Right? इसकी Like a, interpretation कैसे करेंगे? like a queen type, like queen or Very right. Like a high. queen type. Very अब intuitive. queen कौन होता है? Queen होता है कि you are at a good level, higher level. Right. Explain, explain, Ripple, explain your reading into that. And she should pay attention to her dreams. जो उसकी dreams है, aspiration, तो उसके ऊपर अपना attention देगी, तो she will be successful in her venture. और universe भी उसके साथ है, the angels are with her, और she is very intuitive lady. तो जब वो अपनी intuition use करेगी, तो उसकी definitely venture में success आएगा ही आएगा. तो this is what it depicts. Okay. This is how we do our readings. अपना हम इस तरह से अपनी readings को करते हैं. That's very Thank you, Ripple. But it is very simple. Actually, it is not Yeah, very it looks- complicated. You it just looks need to very go simple. through it once. correct. And you go through it once, you can refer my book, and you get all the answers over there. You take out that page, tick. In fact, I've got 15 to 20 pointers I've given. You don't need to read Yes. all the pointers. Any pointer that you want to wish to, any finger that wherever your finger stops, that will give you the answer 100%. The book में देखो, somebody's asking how much does it cost? So you Well, just how much are you ready to pay? How much are you ready to pay for your own, your life-changing thing? You pay thousands of dollars to doctors and all. But this is for your own investment, and it's not much. It's what about Right. maybe around $10. That's it, the book. That's it. $10 to $12 or क्या? Amazon में है ना, yeah, you can buy it. Amazon पे. I'm talking of US dollars. Yes, Right, it's right, about right. $10. And the cards? India में cards are also again $12. Oh. And also So from not a Amazon? major investment, no? नहीं, Amazon में ही है वो भी Cards are cards. not on Amazon. Cards are not on Amazon. The book is on Amazon. Book India में मैंने उसका प्राइस 795 रखा है, और Okay. वहां पे अराउंड $10 होगा, या $9.99 होगा. Wow, I'm not that's- sure. काफी दिन हो गए मुझे पोस्ट करे हुए Amazon पे. I'm gonna order it today. It should be here by It is tomorrow. amazing, Vinay ji. It'll be here by tomorrow. It's amazing, and you want, and then order Rider-Waite cards also.
वो भी आपको Amazon से मिल जाएंगे. कार्ड्स भी? Again, around $8.5 you'll get the cards also for तो around आप अभी दिखा रहे हो $8. कार्ड्स, यही कार्ड जो आप वाले हैं कि किसी और नहीं, के? ये वाले नहीं, ये मेरे वाले कार्ड्स आपको नेक्स्ट मंथ मिलेंगे. जो इंडिया में है उनको मिल जाएंगे, जो यूएस में है, कनाडा में है, तो वो उनको अभी नहीं मिलेंगे. ये मैं अभी नेक्स्ट मंथ मैं Amazon पे आई विल पुट इट ऑन Amazon. ओके, सो then I'll wait. Yeah. नॉर्मल राइडर वेट के ऐसे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट है. हाँ, दीज ये कार्ड्स आपको मिल जाएंगे. इफ दोज हु वांट ये टू डू Amazon। देयर ओन रीडिंग्स, they can do it through them actually. Hmm. No, that's really. So anybody has any questions here? Like, okay, Shali's asking, how did it help in your own life? That's a good question. Who is asking? Shelly. शैली जी आज पूछ रही है कि आपको अपने लाइफ में कैसे हेल्प किया है this tarot reading? Both of you. Very interesting Yes. and very okay. Thank you, Shelly, for asking that. That's too personal, but I'll share it actually. Just give an idea. But see, everybody has a phase of life, Shelly, and everybody has a phase of life. Good days and not so good days. And not so good days, I have spent 20 years, with not so good days. Oh boy. Not a small time, okay? Not a small time. It's a big time. And 20 years, I was very low in life. Oh. But I never took a wrong way. But something told me that something, I have a different calling. So then one day I kept my foot down and I said, I will live my passion. So my first passion was motorsports. So I ventured into the line of motorsports. I became a ace rally driver of India. I written a book on that. It again, that's also on Amazon. That's by the name of The Racing Monk. Again, that's again, that's the first actually. Nobody, I'll see if I have, yes, I have that book. Yeah. See, this is The Racing Monk. Gautam Sethi. Why monk? Because हाँ जी, ये भी मेरी book है. This is my Jeep actually. Oh, very nice. Yeah. Nice. So when when you just have to change your mindset, and it can change in one day. You should not, you should be prepared to change your mind in a snap of a second actually. So then I said, no, I will live my life in a happy way. Then spirituality, called me into it, and it kind of pulled me towards it. So I started doing a lot of meditation, and 2020 was a beautiful time for me. I got time for myself. I didn't, because of COVID, we were locked indoors. Oh, yeah. I used to see videos. I used to do a lot of meditation. I used to write a lot. I used to think a lot actually. And that's how I got into this line. And yes, and her question, how did it transform me? I'm in front of you. I'm teaching tarot. I'm changing lives. People are going crazy. That's how I also relate to it. First, I used to think, is it effective? Is it, मतलब बहुत डर भी लगता है. शुरू में बहुत डर लगता था कि आप किसी को उसकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, बट आप उसके चेंज कर सकते हो. But yes, when you see 100% positive results, so then that motivated me to get into it in a full way actually. So now I'm doing it in a bigger way. No, but did you meet someone who you learned from somebody, or you? No, Vinaji. I haven't learned it from anywhere. It's coming directly to me. Yes. Okay. मुझे अपने आप से ही होता जा रहा है. I don't know. मैं किसी मेरा कोई मतलब I haven't learned it from anywhere. From anybody. Okay. So just. But it has transformed my life. Shelly पूछ रही थी ना. It has really transformed my life. I'm a much happier person, much lighter person. अब मुझे टेंशन और इतनी ज्यादा एंजाइटी, palpitations हाई होना बहुत कम होता है. I am also a human being. मेरे को भी होता है. But I can snap off very fast. I can come back to life again. And what about you, Rimple? Any influence? What yes, happened? Rimple's life is also interesting if she tells. Yeah, let's. See, even this transformed me also. And I take daily guidance basically. And I have full faith in tarot. कोई भी बहुत important decisions होते हैं कुछ that पहले I ask tarot and then I go ahead with it. और अगर no आ जाए तो मैं फिर उसको नहीं लेती. So I have full faith. This is Rimple, what I has it changed your life? Has it influenced you in any way? little bit. But let me ask one. Yeah, Maybe the silly. confident. Yeah, maybe it's a silly question. But आप same question अगर आज पूछोगे, you get one answer. Next day you ask the same question. Will it be the same?
The Hey, but why will energies you ask the same question the next day? Yeah, let's say I ask the same question again because you're not sure कि भी मैं दोबारा पूछ लूँ चलो मैंने पूछ तो लिया है लेकिन एक बारी मैं दोबारा पूछती हूँ It कि is ये very simple. Vinaj, it is very simple. You're going to a doctor. आप डॉक्टर से पूछ रहे हो कि मेरे पेट में दर्द है, प्लीज टेल मी. वो कहेगा आप ऐसा करो, कोई दर्द नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ acidity. You have been eating fried, lot of fried these days. Please don't have fried. okay. Okay. And the next day again you go to the doctor, again you ask the same question. Oh, no, no, I'm not convinced. So I will not have fried today, but will I have a stomachache again? What will the doctor tell you? That's why I'm It asking is you. very similar. Similar. That's what. Hanji, similar. But Ah, yes, definitely you can ask, when you ask tarot, put a question in a different way. correct. That's what I'm saying. Same type of a basic thing is the same, but question पूछना different है, different way. But हाँ, answer. पूछा, पर जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको टैरो एग्जैक्ट आंसर देगा. Hmm. आप सेम क्वेश्चन रिपीट करोगे तो वो रिपीटेड आपको आंसर रिपीट सेम देगा. Like कार्ड something. में भी डिफरेंट, कार्ड Hmm. में भी डिफरेंट, बट द आंसर विल बी द सेम. Okay. That's what I'm asking because sometimes you're not sure. एक हफ्ता पूछा next day, next week you want to ask the same question again, or you're not sure. So the basic thing is Okay, answer is the same. again a beautiful question I'll tell you. So somebody asked me कि suppose, क्योंकि वहम हो जाता है, we get into superstitions कि suppose we're going to do something and the tarot says no, you don't have to do it. Then what do? You're in a very confusing state. Right. So then what do I suggest? It's very simple. Ask tarot कि I wish to do it and you have said no. So ask the second question, what should I do to make it happen? Okay. Or how should I make it happen? Or will it, if I do it in another way, will I be successful? So ask it in another, give a second question, take out the second card. Tarot will again, if it's a yes, then tarot will tell you do this, so you will be successful. And if the tarot will tell you ki no, you will not be successful, it will give you a no answer, no card to it. Hmm. And if you get a no card, again, it will not be, see, it is a guidance tool. Right. Here we are 100%, I'm saying tarot is magical cards, but things you have to do. Oh yeah. It will rain. The tarot or I cannot stop the rain. बारिश होगा तो बारिश होगा. दिल्ली में बहुत बारिश हुआ. Um, But how you deal with the rain? Because आज मुझे पता था कि आज सुबह बारिश होने वाला है. I read it in the forecast, and I had to go somewhere. I took a timely. I left little at least 1.5 hours before that time. So you can make arrangements for that. You carry an umbrella, you carry a raincoat with you. right. You make those arrangements and you leave early. And it rained. आज के न्यूज में भी आया हुआ है. It rained very heavily in Delhi and Gurgaon area. Really? So, Yeah, I heard that. so you become very well prepared of all the problems that you are going to face in life. So when you are equipped, life becomes easier. It gives a beautiful guidance to you, and Yeah, it's आपने आपकी dedication yeah, भी मिल जाती है आपको. that looks like you guys are wearing warm clothes. I'm look at me. तो इंडियन No, आपने गौतम no, जी ने मेरा तो ऐसे जैकेट पहनी हुई है. जैकेट मिस नहीं नहीं, लिटिल वार्म नहीं, कॉटन है. बारिश करके लेयर्स पहने हुए हैं. मैं कभी यहाँ पे तो अभी थोड़ी पहले मॉर्निंग इवनिंग का स्कूल. But anyway, Shali ji, that's a question for you. I think Shali ji is asking another question that what stone is good for her. Now, how do you determine? Now she's asking that question. आप कैसे determine करोगे इनको कौन सा stone suit करेगा? Is there any questions you have to हाँ, ask her? उसके लिए get a tarot reading done, Shelly. If you want a proper guidance through that, लाइव में आई सजेस्ट कि आप रिम्पल से या मुझसे एक बार टैरो रीडिंग कराओ. टैरो से पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन से में आपको प्रॉब्लम, किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है. जो चीज आपको प्रॉब्लम बता रही है वो प्रॉब्लम, देन वी नीड टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड उस प्रॉब्लम के हिसाब से रिम्पल विल गाइड दी एग्जैक्ट क्रिस्टल और द ब्रेसलेट, और यू वांट टू कीप अ टम्बलर एट होम, तो जो भी है, रॉक वगैरह रखना है, जो भी है, जो प्रॉपर रेमेडी आएगी प्रॉपर तरीके से अगर पूछेंगे, आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. यानी लास्ट टाइम आपने कुछ कहा था ना कि टाइगर आई के लिए इट्स गुड फॉर सम पीपल. हाँ, वो जनरल, देखो जनरल रीडिंग के लिए तो अच्छा है, बिकॉज शैली इज लिटिल डिस्टर्ब और व्हाट आई नो, शैली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, उनकी एनर्जीज जो है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि टेक अ प्रॉपर रीडिंग, बिकॉज शी विल गेट
अगर एक सही तरीके से चलेंगे, अभी भी बता सकते हैं, अभी भी कुछ भी, अभी रिपल अभी बता देगी। रिपल कौन सा पहनना चाहिए, उनका माइंड बहुत अपसेट है। She should go for amethyst. वेरी Mind नाइस। black. माइंड उनका अगर माइंड बहुत अपसेट है, दैट्स व्हाट आई कैन रीड। आई डोंट नो शेली, आई हैवंट सीन हर बिकॉज़ मेरे स्क्रीन पे सिर्फ आप दोनों ही आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। नहीं वो बट मैं आई कैन रीड हर एनर्जीज, रीडिंग हर हम्म एनर्जीज आई नो कि उनके एनर्जी उनके ठीक नहीं है। माइंड इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स तभी। जनरल sometimes वेयर एमेथिस्ट। lot of I mean एंड इफ यू, sometimes yes या, amethyst that's a good because it's a funny thing जो आपने उस दिन बोला ना टाइगर का स्टोन का तो I had gone to the mall I had gone to the mall I bought something I want to return something and पहले argument हो गया नहीं नहीं ये नहीं कर सकते वो टाइम anyway we're talking and I started I looked at the girl's arm American लड़की थी she had so many of those stones टाइगर आए यप, दूसरे साल पहने हुए तो मैंने कहा यू आर वेयरिंग टाइगर आई कहती या मैं कहा वेयर यू गेट दैट फ्रॉम कहती ओ वे इन दिस मॉल वी हैव 2 स्टोर्स दे सेल ऑल दिस थिंग्स तो उसके बाद जब मैंने बातें करनी शुरू करी तो बात करने का तरीका ही बदल गया जो मैंने वापस करी थी सब चीज़ें वापस करी एवरीथिंग वाज फाइन नॉर्मल टॉक या, शी वाज वेरी हेल्पफुल वेरी नाइस आई बॉट समथिंग एल्स बट द वे ऑफ टॉकिंग through the stone because I started talking about the stones so I said I believe in it and this that she said no I also believe I said you can I said where did you get it from कहते इधर 2 stores हैं मॉल में आप जाके देख लो वहां से so we started talking आपने like देखे? no I didn't get time to go because I had my friend with me she was in a rush तो मैंने कहा चलो next time but I said I'm going to you know come to India so I'll that's the best place to see it नहीं, but I'll suggest one thing. Whenever you have to wear a crystal or a bracelet, always be sure of what you're buying. You don't right wear it by उन्होंने पहना इसलिए मैं भी पहन लूं. No, it doesn't work like this. I have to get the one which suits like अभी उन्होंने आपने Yes. बोला ना I have to get हाँ जी, something for me आपने नोट नहीं हाँ किया जी। आज गौतम जी आपने येलो पहना हुआ है। यस यस यस, नो आपने नोट बोला तो आपने अभी नोट देखा किया। है अभी यस, देखा है तो आई एम एक्चुअली मैंने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है, तो मतलब मेरे एक तो पिक्चर छोटी है, फिर उसके छोटी पीछे छोटी नाम आ रहा है, तो अब आपने ऐसे किया तो नॉइस हो। ओके, तो येलो इज बिकम योर फेवरेट, राइट? even my hair has हाँ, more वेरी नाइस। all that too You're looking happier also, more jovial also today, huh? I'm always like that I'm always like this mostly Excellent. yeah I like to Mostly, joke yeah. around so there was she was I mean like I said I changed the tone of that woman who was in the store she was in a bad mood so we just started talking and then she started laughing and she's helping me all over the place come again my Yeah, name yeah. is naam ye hai so you got to know how to talk to people otherwise you know if हाँ, I'm तो good लास्ट टाइम हमने टैरो करा था, जब रीडिंग करी थी, तब हमने लास्ट टाइम काफी सारे कलर्स के बारे में किया था ना। yeah yes तो तभी मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, टैरो विल टेल यू एवरीथिंग, योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट फूड, योर फेवरेट whether you should do a job, whether you should do an event, you should not do an event, you should uh, want to get in, want to make some kind of investments you want to make, anything and everything under the sun. And your hmm. relationship problems, it helps I think we tremendously. talked a lot about health health के लिए क्या करना चाहिए you said to put some I think रमा जी को किसको कहा था कि put some light color blue color or something in the water or something like that कुछ ऐसा हाँ, था it depends from person to person, Vinay. right I know जनरल केस में अगर आपको देखो, हेल्थ डिपेंड करता है, इफ इट इज यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, सी देयर एनर्जीज आर इन अराउंड अस, and if you are attracting negative energies, so I'll give you a general tip today. I'll give you, so keep a glass of plain water, glass bowl में डालना, not a glass, but keep a glass bowl which has a big, big mouth, like big opening opening, okay थोड़ा सा broad opening होगा, तो just keep that. It should be a cut glass, even better, and just keep 3/4 filled with water, and place it at one side of the main room, main drawing room or the lobby area that you have. You just place it over there. So that energy, that will attract all the negative energies. And if you want to, if your house, you will find your house, if you find that your relationships are gloomy, your mind is little clogged up, घर का माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा आपको, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं उतने उसके अंदर आप फ्लावर्स डाल दो, बाउल के अंदर ही. oh Suppose you are 2 members staying there, 3 or 4, whatever, 5. So 5 members, are just put 5 flowers in there. I think 5 flowers should last, say, about a week's time. 5-7 days they will last. you see ball के Keep अंदर them put some उसी बॉल के petals अंदर. नहीं petals हाँ डाल जी, दो
के फ्लावर के डिफरेंट पेटल्स डाल नहीं दो नहीं, उसके, पूरे फ्लावर्स डाल दो, छोटे छोटे फ्लावर्स ही डाल दो, बोल फ्लावर्स ही में डाल दो। पूरा फ्लावर डाल दो? छोटे बोल में आ जाएंगे तो क्या होगा, वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, छोटे से बोल में डाल दो, कोई बात नहीं, इट विल फिल दी थिंग। नहीं, that's only for people living in your house or your family? No, people living in the house. You're concerned with the people living in the house, right? Only in the house. It In could your house. also, If your house has negative energy, if you're talking about health, if you're concerned about your parents, suppose, right. then you put a picture in front of that bowl. एक picture रखो, उनके picture के आगे keep a glass bowl, put water into that, and put one flower into it. Okay, what about if you were a little bit concerned about your children? Okay, बच्चे तो सामने ही, kids are not living in your house. My house, my kids are not living. But I'm just saying, Okay, good. if I, Okay, if now, I, so then उसके लिए again a beautiful thing you can do. Place a picture of your whole family, not only your kids. पेरेंट होगा तो यू कैन कीप दैट पिक्चर अलोन, right, पर right, अगर right, आपके बच्चों के लिए अगर आप कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग इट फॉर योर किड्स, या सपोज आई डू, एनीबडी हु इज डूइंग इट फॉर देयर किड्स, so they should have their whole family picture. Keep that family picture in front of that, keep that bowl of water. Water is very very yeah, I know. very very, it absorbs a lot of energy, all negative energies it love absorb. You can Somebody, do this for business as well. You can do this for business जिसका business अच्छा नहीं चल रहा, oh, या जिसके घर में और पैसे को लेके परेशानी है, if there is problem related to money, keep I again it depends, but you can keep coins into it. उसके अंदर, पानी के जब अंदर, बोल के अंदर? उसके अंदर, पानी के अंदर, दो चार, डिपेंडिंग ऑन दी, मतलब आई प्रिस्क्राइब डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन, बट अगेन टू मेक इट थिंग सिंपलर फॉर पीपल, यू कैन हैव एज, जस्ट सपोज सेम थिंग, जिसने जो चीज आप चाहते हैं उतने आप कॉइन्स डाल दो, सपोज आप फैमिली मेंबर्स के हिसाब से डाल सकते हैं, देयर हैज टू बी सम लॉजिक टू इट, इफ यू Right. कांट फाइंड एनी लॉजिक, आपका कौन से मंथ में बर्थडे होता है, उस मंथ उतने नंबर्स के आप कॉइन्स डाल दो, सपोज Oh, आपका मार्च में बर्थडे होता है तो पुट 3 कॉइन्स, सपोज right. दिसंबर में होता है तो पुट 12 कॉइन्स, तो Mhm. उतने उस हिसाब से आप डालो, एंड कीप दैट कॉइन्स, एंड आफ्टर अ वीक जस्ट चेक दोस कॉइन्स, उसमें आपके कॉइन्स ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, Hmm. दैट मींस इट इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज. Now, if you have more than, like, for example, um, now let's take like a case of me. I'm alone. I mean, left for me only. So I can do this thing for my just if whatever it is, the date of birth is, put that X amount of coins in it or something. Can you put the flower in it too? No, don't mix it, both the things. No, Can you only one thing? don't One, mix too many things. हाँ जी, right, right, keep two right, bowls, और right. अलग अलग रखना है. Don't keep it at one place. Different places. Just keep the energies, because we attract, because I work on energies. Okay, everything is energy, so let them, give them some space. हम एक तरफ से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी हम पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो पास होएगा तो क्लैश, तो लेट देम बी इन Ah, सेपरेट प्लेसेस. okay. Those are two separate things. Okay. Yep. Very interesting to know. तो आपने ऐसे, आपने this kind of a reading, is this through reading or this is just your own knowledge? क्या है ये? Own knowledge, because I connect with energies, like I told you energy last time. Yeah. This is what psychic medium is. मतलब I can, through people's energies, I can connect with the divine energies, and then I get downloads. And then downloads, it's medium का काम ही होता है, just to interpret the messages that we get, and to the message that we get, and to deliver those messages. You get, universe gives messages to everybody. Oh yeah. Only we guys are not very aware कि हमारे को कहाँ से वो messages, क्या, कैसे उसको interpret कैसे करना है. So like let's say this is also a very general question. तो जैसे आपको, जैसे आप कह रहे हो सबको messages आते हैं यूनिवर्स से. Like give an idea, तो how should we, हमको ideas आ रहे, हमको कितने thoughts आते हैं. So how should we know कि यूनिवर्स दे रहा है? हाँ, how should we know? Good. Tarot से करो ना, tarot सीखो. Tarot is the beautiful way to connect with your own inner self. Okay. Tarot is not about prediction. Tarot is not only about कि आपने क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं tarot card निकाल लूं. नहीं नहीं. Tarot is about how to connect with your own, with your own self. Like Shelly was asking. Mm-hmm. Shelly, my life has totally transformed. Totally transformed. I am living every day to the fullest. I am living my passion.
from driving into the highest, into the hills of, into the high passes of Leh Ladakh in India, Okay. to sitting in, sitting in meditation for one and a half hours. So I can do both. इधर और So भी that's the क्वेश्चन, transition that I feel. I just got some questions here. शाली जी ने क्वेश्चन किया था ना स्टोन का, फिर बाद में कमलेश जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है. एंड ऑल्सो रमा जी कह रही है कि गौतम जी, आई एम ऑल्सो वेयरिंग लाइट ब्लू स्टोन, फीलिंग मच बेटर. हाँ, thank you. You will. Very nice. लास्ट वीक याद है You ना will आपको? feel better. हाँ जी, last time बोला था उनको. she wrote back, I'm feeling, you know what, I met, संडे की बात, हम पिकनिक में गए थे तो मैंने देखा रमा जी ऊपर से ले नीचे तक ब्लू पहना हुआ. मैंने कहा ये क्या हो गया? तो These things have healing powers. तो she said no, मैंने इयरिंग भी ब्लू These things पहना. have, yes, definitely these things have healing powers. So and I said, she said मतलब मैंने हमारे को बहुत अजीब लगता है, हमारे को बहुत अजीब लगता है, but definitely it has healing powers. एक दिन ना मैं किसी की क्लास, I was teaching a group of students. So my students are not those, youngsters. My students are elder to me also. एक PhD है लेडी, एक डॉक्टर, वो PhD डॉक्टर हैं, एक मेडिसिन की डॉक्टर हैं, एक एमवे की बहुत अच्छी, मतलब शी इज अ गुड, मतलब सेल्स करती हैं Amazon पे एमवे की, और एक वैसे ही बहुत साइकिक है, एक एस्ट्रो टॉक वगैरह पे टैरो कराती भी है, शी इज आल्सो डूइंग अ कोर्स. सो उसके उसमें तो उनका ना एक, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन पूछे. मैंने कहा एनी क्वेश्चन कैन आंसर, टैरो कैन आंसर. तो एक का क्वेश्चन था कि शुड आई वेयर, शी हैड टू गो फॉर एन इंटरव्यू, सम लेडी. तो उन्होंने पूछा मैं शुड आई वेयर ब्लू एंड गो और ग्रीन ड्रेस शुड आई वेयर एंड गो. तो बाय चांस एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू कलर्स. टैरो इज वास्ट थिंग, बट जब वो टैरो बात कलर्स की चल रही है तो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट कलर्स. तो इट टुक अस 1 hour. And she got so amazed कि how is that blue color beneficial to her and that green color is not lucky at all. And then she recollected wherever she was wearing that green color, कोई भी इंटरव्यू के लिए गई हो, for that matter कोई एग्जाम के लिए बैठी हो बचपन में भी, उनको नेगेटिव उसका असर हुआ है. एंड बाय, मतलब बाय चांस समझ लो, बाय कोइंसिडेंस समझ लो, whenever she is wearing a blue, things are working in her favor. that's really good. So everything has got logic to it, and tarot will give you that logic. Coincidentally मैंने थोड़ा सा touch, there were two people you said last week to wear blue. Like one is light blue, one was medium blue. Yes. Yeah. And coincidentally उनका दोनों का birthday भी same month है. Uh-huh. That makes a difference at time of the year if you're born, or is it just a general thing? When the month, it is definitely makes a lot of difference because the planetary positions change. When the planetary positions change, our energies change. Same date भी हो तो फिर क्या होगा? अगर किसकी same date हो? Same date हो, सबकी देखो एनर्जी सबकी डिफरेंट होती है. Okay. सबके क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, सबके कर्मास डिफरेंट होते हैं. A lot of things depend on your past life. Last life जो हमने बात करी थी. Yes. A lot of problems we attract from our past life karmas as well, from our past lives, not lives. Lot of lives. Very good question here. शाली जी पूछ रही है कि आपने ब्रेसलेट कौन सी पहनी हुई है? मैं तो शौकिया पहले तो लगे तो सही. आपने कुछ पहना हुआ लगना चाहिए कि मैं टैरो रीडर हूँ. नहीं, पर आपने पहना है ना. मैंने अभी शाली जी ने लिखा था, मैंने नोट किया, मैं कहा यस, बात करते हैं तो नजर आता है. I'm wearing a triple protection bracelet over here. Oh, two of them. It's got tourmaline, it's got tiger eye, and it's got pyrite. So this is a triple protection, and एक ये lava का है, which gives me that rugged and a strong feel it gives me. And आपने बाकी ये क्या पहना हुआ है? कड़ा पहना हुआ है क्या नीचे? ये मैंने कड़ा पहना हुआ है. हाँ. अब this कड़ा, okay, that's got a very interesting story to it also. तो कड़ा मैं पहले पहनता था, मेरे को कड़ा पहनने का शौक था, तो मैं ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि यार तूने कड़ा क्यों पहन रखा है, तो तू सरदार थोड़ी है, उतारो कड़े को. So I had to take it off. I'm talking of when I was very young. So this kada, my nephew was wearing it. Oh. So I told him, मैंने कहा कड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. I'm getting very attracted towards it. So you have to give it to me. So ever since he's given to me, I'm wearing this kada. It gives me a lot of power. It does. And I can feel it. I wear mine all the time. I haven't taken it off. Even I'm wearing. It gives a lot of, yes. See, लोहा जो होता है ना, iron जो होता है,
gives you a lot Iron of gives a lot of power to it. power. It has a lot of power and fearful. You're not scared of anything, You're not Yes, scared. That's absolutely. true. right? That could be, again, see, that's a remedy by itself. Those people who are a little Exactly. scared about doing anything, they're skeptical whether they should be doing it or not because of unknown fear. Wear a iron ring or a kada Mm-hmm. I and feel works wonders. I'm protected. If I go anywhere, I feel I'm protected and safe. You know, Yes, I'm wearing 24 hours. I don't take it off. Never. No matter what jewelry I'm wearing, what I'm wearing, I don't care. But मैंने कड़ा तो पहनना ही है. That's it. Same here. Same I here. feel, Even I'm wearing for past, I think, 20 years. yeah. मेरे पास गोल्ड का भी है. मैंने वो नहीं उतार दिया. मैंने गोल्ड का उतार दिया. नहीं, but I wear that Gurdwara wala, so I'm wearing for past 20 years. Mm-hmm. Gurdwara. मैंने दो पहने हुए हैं actually. I'm wearing two because one I got from one Gurdwara, one from somewhere else. So मैंने दोनों पहने हुए हैं. But I feel very protected. Yes, Yes, you yeah. can. शैली जी गुरुद्वारे में मिलते हैं कड़े. You go to the Gurdwara, you can get the kada anytime. Or they'll tell you where to get it from. And Shali ji is also asking what color is good for her. आपने bracelet उसका तो बता दिया ना, stones का. आप पूछ रही हैं उनके लिए कलर कौन सा अच्छा है. शैली को बोलो सारे क्वेश्चंस लाइव उसमें मत पूछो. प्रेशर लो उनके साथ. सारे क्वेश्चन लाइव में मत पूछो. question बट भी- शैली को मैं बता दूं, शैली जी से आप ये पूछो एक मिनट, if she is hearing me. Of course, I think she can hear me. She can hear you. Shelly को पूछो, Shelly, if you have, a lot of mental issues, or you have that physical pain that you are bothered about, give me one answer. अगर आपको mentally आपको ज्यादा tension है, anxiety है, कोई confusion है, तो tell me one, A, or B is if you have some physical pain, then I'll suggest you what to wear. Okay, Shali ji पूछ लिया, समझ आ गई ना आपको. हाँ, she replied. Okay जी, she said. That's Let her reply. Yeah, कड़ा. If anybody wants to have a live reading, we can do a tarot reading as well. किसी को कुछ पूछना है, except colors and a lucky color, everything that they want to ask in from tarot, they can. Kamlesh ji was looking forward for this session. Kamlesh ji को पूछ सकते हैं. कमलेश जी ने क्या लिखा कि yes, I agree. I wear the kada. You are protected. I agree that you are protected. But she wears माता का कड़ा always. She says always. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माता का कड़ा हो या वही तो मैं कह रही हूँ, गुरुद्वारे का कड़ा 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 ही होता है. Spiritual, हाँ, wear it with good faith from wherever you wear it. जहाँ पे भी आपको faith है, सब जगह का जितना पायस माता का है उतना ही पायस गुरुद्वारे का है. सबका एक ही लेवल है, सबका पायस ही रहेगा वो. वो कह रही है अपना फोन नंबर देना. शैली जी Okay, क्या we'll mention in the I comment box. will share it with you, शैली जी. तो ये कमलेश जी एक और क्वेश्चन कर रही हैं, which is I think she said she has a problem. She wants to visit her friend, but it's not getting easy for her. It's getting difficult for her. तो क्या करे? Is that If she wants to visit a friend, She wants to meet a friend or visit a friend, but she's having a little trouble doing it. मतलब सारे रास्ते में ना, every time she tries, she has like a blockage, you can say. no, she should go ahead. The universe will help her. तो क्या लिखा हुआ है? Strength का card है. She's got the strength. Now the right time is now. दिखाना जरा. Now the right time has come. Right time has come. Okay. The right time has come. She can go now. अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. Okay. टाइम का भी फर्क होता है कि आपका सही टाइम है कि नहीं है. उनका अब सही टाइम है. Okay. कमलेश जी को बोल सकते हैं. Now she can go. Now there will be absolutely no problem. Again, I think this people asking about the health. My health is not good. Please let me know what. This is Kiran ji. Kiran है यहाँ पे. What should she do? What can she wear? No, I'll tell you what to do. Wear Kiran. I'll tell you what to do first. Last Will time you need to wear, Kiran, or आपने कहा था last time. I'll tell you. Little bit confused. आपने कहा था. She said my health is not good. Please let me know what I can wear. मतलब maybe she means the crystal thing. तभी मैंने आपको उनको, हाँ, किरण को मैंने कहा था ना, कहीं मैं इनको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा है. मैंने शायद ये कहा था लास्ट टाइम. यही कहा था आपने. अभी भी वही कार्ड आया. अभी भी ना स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. स्वॉर्ड्स मींस थॉट प्रोसेस. देखो एक थॉट मिनट. प्रोसेस. Let me highlight it. Hold on. एक मिनट फिर दिखाना. Okay, can you see it, Kiran ji? Ace and swords. Whoa,
very strong sword तो looks like a very strong स्वॉर्ड दिखाता है थॉट प्रोसेस, okay स्वॉर्ड तो थॉट प्रोसेस को दिखाता है। और किरण जी इमोशनल भी बहुत है। दूसरा कार्ड भी इमोशन का है। ये दिख रहा है, पानी दिख रहा है आपको, और ये हाथ में कप उठाया हुआ है। अच्छा कप हाँ शोज इमोशंस। तो किरण जी इमोशनल भी बहुत है, यस लिखा हुआ है और बहुत जल्दी इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाती है। This thing I can wear she said yes she said yes she is तो किरण जी आप भी नंबर इनका ले लो आप प्राइवेटली बात करोगे तो यू गेट मोर क्लैरिटी आपको नहीं तो क्वेश्चन प्रॉपर सेशन लो ना। अब जो टैरो सीखना चाहता है वो मेरे टैरो स्कूल को ज्वाइन कर लो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आई गिव लॉट ऑफ इनसाइट्स, आई स्टार्ट गिविंग। आप मेरा टैरो मी टाइम टैरो स्कूल के नाम से आप को उस पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप अपना लिंक डाल देना रिंपल, अपना लिंक डाल देना इन पे। गौतम जी अगर आपने किसने सेशन लेना है 1-on-1 तो भी तो ले सकते हैं ना हाँ जी हाँ जी, हमारा मेन काम ही यही है। आप रिंपल से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, मेरे से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। राइट बिल्कुल सो बिल्कुल करेक्ट। आई सजेस्ट देखो किरण जी वन टू आप वन सेशन, 1-to-1 सेशन लेने से ना पता क्या होता है, एक तो ना आपके कई बातें ऐसी होती है हम जो ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बात कर सकते। राइट दैट्स ट्रू कई चीजें ऐसी होती है, एक नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम किसी के सामने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हम नहीं डिस्कस करते हैं। इट्स ऑलवेज टू बेटर टू टेक अ 1-to-1 सेशन, बिकॉज 1-to-1 सेशन के ना अंदर एक के बाद एक चीज नई चीज खुल के आती है। और आपको यू विल बी अमेज्ड कि कहाँ से हम अट्रैक्ट, कहाँ से हम नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो है तो अभी परसों मैंने एक केस किया, मैंने तो उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि आपके तो फैमिली के अंदर सबके साथ ही प्रॉब्लम है। तो कह ओह रही सर बिल्कुल ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम है। देयर आर 2 ब्रदर्स, एक का डाइवोर्स हो गया है, एक की वाइफ बहुत मतलब बहुत इरिटेटेड रहती है। बहुत इरिटेटेड मतलब बहुत ही लड़ाई, सबके घर में, उनके घर में लड़ाई रहती है। मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। और मैंने बोला आपका जो उनका जो बड़े बेटे का आगे बेटा है, उसकी भी मैंने कहा हाउ इज ही गुड इन स्टडीज। बोला उनका दिल ही नहीं करता पढ़ाई में। मतलब ही इज इन अ वेरी मतलब 8th या 9th ग्रेड में है वो भी उनको भी स्कूल से आगे भाई अगर ऐसा चलता रहेगा विल हैव टू उनको हम फेल करना पड़ेगा, ही हैव टू रिपीट द क्लास। तो देन आई टोल्ड हिम, बिकॉज उनको उन्होंने कई फैक्ट्री लगाई थी पहले, 7-8 years बैक उन्होंने कई फैक्ट्री लगाई थी। उस फैक्ट्री की वजह से दे आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। ओह जहाँ फैक्ट्री का लैंड था, वहाँ लैंड में देयर वाज सम प्रॉब्लम, एंड देन ही वैलिडेटेड दिस थिंग। उसने बोला कि हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि जिस जिस लोग ने वहां पे उस एरिया में उस हमने फैक्ट्री जब निकल भेज दी, ऑल्दो दे वर ऑन रेंट, तो दूसरा कोई रेंट पे आया तो उन्होंने उनके साथ भी वही प्रॉब्लम रही है। तो वी अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज। तभी 1-to-1 सेशन लेते हो तो कहाँ से नेगेटिव एनर्जीज हम अट्रैक्ट करें, वी कैन फाइंड आउट दैट, एंड उसकी तब प्रॉपर रेमेडी आपको मिलेगी। वो तो फिर ये हेल्थ मतलब अगर 1-on-1 करोगे तो यू विल बी ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पर्सन इफ यू डू इन अ ग्रुप देन यू कैन Yes, yes, on the yes, yes, only one person. Yes, yes, you can't and ask you so can many talk questions about any. yeah You but can if ask any number of questions. अगर ग्रुप में करोगे तो फिर आपको इतने ज्यादा चांस क्वेश्चन करने के नहीं मिलेंगे दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नहीं मिलेंगे। get a question 1 or 2 Yes, yes, that's it other people are there too yes. be with them तो अगर आप interested हो get in touch with me or I will send you she says she's interested to get the link but I'll give you the send the link to you as well as give you a contact number and give Gautam ji a call or Rimple a call and do a one-on-one session that's what I suggest Baki's up to you um, everybody has personal questions sometimes one thing जैसे आपने कहा है एक क्वेश्चन करो तो leads to something else you don't realize कि इतने सारे क्वेश्चन थे जब बात करोगे तो then you realize कि ये भी था ये भी पूछना था ये भी ये भी था, ये भी था। हाँ ये भी करना गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग somebody just came now तो I would suggest I'll give you I'll send share the number with you guys get in touch with me Kiran ji and I will share the number and I think Kamlesh ji भी कुछ और क्वेश्चन करिए Kamlesh ji you have a lot of questions I suggest the same thing for you have a private session and you can ask as many questions as you like Gautam is saying one question leads to another तो अच्छा friend का तो question कर लिया then there's another question she also had yeah so the couple of questions what do you see she's asking and again what do you see my timing now is it going to be happy that's too personal Who's asking this? Kamlesh ji Kamlesh ji is asking. you can answer that okay Not so great. oh Not so great.
she'll have to do something about it. तो फिर वो तो आपके साथ सेशन करेंगे तभी बताओगे ना क्या करना है. तभी तो मैं कह रहा हूँ इसमें वन लाइनर्स में ये दिक्कत होती है. वन Yeah. लाइनर्स में ये दिक्कत होती है. एंड उनको उनको पता भी है, उनको भी पता है कि क्यों वो पूछ रही है, जिस हिसाब से वो पूछ रही है और जिस जो थॉट से वो पूछ रही है उसका आंसर नो है. पूरा Oh. लाइफ कल गड़बड़ नहीं होने वाली है. क्योंकि आई कैन रीड माइंड्स, आई कैन नो शी हैज अ पर्टिकुलर थिंग इन माइंड and that is definitely related to money. I'll tell Oh. you that also. पर वो पूछ और कुछ नहीं है, पर दिमाग में उनका पैसा है. There's something related to money or material asset something. Okay. अभी रुक जाओ, अगर खरीदना बेचना कुछ करना है तो उसको don't touch it. अभी just leave it for the time being. कमलेश जी को मैं आंसर दे रहा हूँ. उनके दिमाग में जो चल रहा है, let things be. अभी छेड़ना नहीं उसको. Not a good time. Not a good time to buy, sell or borrow or give anything, you know. Wait for some time. टाइम. किरण जी पूछ रही हैं कि हेल्थ का प्लीज बताओ कैसे रहेगा. किरण जी का हेल्थ का कैसा रहेगा? अगर मेरे को मंथ ऑफ बर्थ पता लग जाए तो आई कैन गिव यू मोर बेटर गाइडेंस. कौन से मंथ में होता है किरण जी आपका बर्थडे? दैट शी विल हैव टू. किरण जी आपका बार बार पहले भी वही कार्ड आया था, अभी भी देखो फिर से स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है. सो नॉट थॉट श्योर. प्रोसेस. नहीं नॉट श्योर नहीं, थिंकिंग. उनका थिंकिंग ठीक नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चीजें, बहुत ओवर थिंकर है. शी इज ओवर थिंकर. किरण जी बहुत सारी चीजें आप सोच रहे हो, नेगेटिव चीजें पकड़ के बैठे हुए हो. You need to release those negative thoughts. And how to release that? Again, like I told you, I need to know the reason for it. Why are you holding it for so long? किरण जी का बर्थडे अभी हुआ है 8/31. अभी कभी पास हुआ है, थोड़ा दिन पहले. हाँ तो अभी हाँ जी, तो अभी पास हुआ है तो फिर अगस्त 31. अगस्त में. हाँ जी 31 अगस्त. हाँ तो फिर इसलिए उनकी एनर्जीज चेंज हुई है, पर उनका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ. She has to let go of things. And how to do it? Again, it will be a very extended session. नहीं But just take a one-to-one, it will help you a lot. अभी तो देखो Your life will change, Kiran ji. खत्म होने वाला सेशन है. You know, we are at the time, but now what I can do is, now can you send me your link? वो कह रहे लिंक भेजो मुझे समझ नहीं. If you send me your link and your direct numbers, I will share it with these people. I will share it or post it over here on my. I don't know if you want me to post it, but I can. Yeah. I'll give you my official number. Please write it down, everybody. If you want to do that, call him direct if you want. तो अभी बता दो. अभी बता दो तो +91 तो इंडिया का जो नंबर है, those are in India, they don't need to put that. Exactly. +91 my mobile number. You can write my mobile number. Again, it's very simple actually, but थोड़ा सा it's 85 888 369 88. So I repeat the number. It's 85 888 369 88. Okay, everybody got it? तो लिंक जो है ना, लिंक आप भेज देना, वो मैं पोस्ट कर दूंगी यहाँ पर आपके प्रोग्राम के बाद ना. इनको रिम्पल वो साइकी किलर गौतम, मेरा उसका यूट्यूब का चैनल भी है साइकी किलर गौतम के नाम से, एंड साइकी किलर गौतम के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पे भी है. तो यू कैन फॉलो मी ऑन बोथ द चैनल्स, ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड ऑन यूट्यूब एज वेल. ऐसे लिख के भेजो तो इजी रहता है ना, वो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगी. मैं लिख के डाल दूं, मैं लिंक डाल देता हूँ. Remember like that, they might not मैं आपको अभी remember. हाँ मैं Actually, इंस्टाग्राम का लिंक आपको भी डाल देता हूँ. I'm part of that thing. I'm part of that. नहीं, I'm a part of that group. I think psychic read आप जो आता है रोज, मैं पढ़ती हूँ उसको, देखती हूँ जो आपका आता है ना. हाँ, अब यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. हाँ जी. But still, share me the link जो those who want to learn tarot, so they can again they can just intimate me or Rimple, and they want to join my tarot school, so they can they can do shorter courses as well. जो हमारे जो किट का जो मैंने आपको बताया, जो they can buy a kit and they can do that reading. अब वो किट कितने का है? थोड़ा सा सस्ता सा किट है. किट आपको अगर इंडिया में है तो आपको मिल जाएगा, अगर बाहर तो है you can buy Rider Waite cards for the time being, and you can buy my book. Like I told you, it's for about $9 or $9.99. So you can buy that book, and I'll give you a special session for that, how to read the cards. Those who want to learn tarot,
They are also Uh, more than welcome. Those who want to to have a let session, they are more let than you all welcome. know, let you all know that I will be traveling to India sometime in a couple of months. So if anybody wants anything from, I mean, any crystals or anything like this from Gautam ji, or any kind of a, let's say, the cards हैं या कुछ, let me know. When I go there, I can bring it for you guys. I have no problem. I'm going to go. Let That'd me be know wonderful. Yes. name of the book, please. अभी उन्होंने बताई तो थी book की नाम. Me आपकी Time Tarot. Meantime Tarot. Very Tea good. Time Tarot, which is available on Amazon Where is there? by Gautam Sethi, right? दिखाना जरा फिर book. Here. Here it is, Me Time Tarot, a comprehensive guide by Gautam Sethi. That's what it is. So you can buy that right now. But if you want the cards, like you say, it might take a month or so. If you want to wait, I can. I'm gonna go and I can always bring them for you if you want. Okay. So anyway, thank you all. Thank you for joining, all of you, and the questions were very, very good to have. That's why I said you should always join and ask. Be prepared with questions. And also, if you have very personal questions or very lot of questions, it's good to go and have a one-on-one session or join the group. Then you can. But even in the group, you cannot ask too many questions, but you still can ask something. It's up to you, you guys, whatever you want to do. So thank you so Most much, welcome. Dimple, Thank you, and Veena ji. God bless. And thank you, whosoever is joined up live. Thank you to each and every Thank you, person. everyone. thank you, and have a lovely day. Thanks, Rashali ji. Thank you, and thanks all the friends who are here, Kamlesh ji and everybody else. Thanks so much for joining. And like I said, do that phone number तो दे दिया आपको. Link भी अभी भेज देंगे. It's going to be on my platform, and you can see it over there. You guys, Right. अभी they're I'm gonna sending it to you right across. send it to me, and I'll put it across over there. Okay, thank you so much. Thanks a Thanks lot. a lot. Thank you, guys. Thank you. Have a Bye. wonderful day in US and wonderful evening in India. Yeah. Bye-bye. आपका dinner का time हो गया. Anyway, goodbye. Thanks everyone. Thank you, ji. Thank you. Bye-bye. Namaste. Okay. I'll call you back in a minute. No. Sure. Sure. Okay.